another video और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है Does God exist and what is God? तो ये दो वीडियोस हैं जो हम मर्ज करके देख रहे हैं क्योंकि इसी तरीके से हमें सजेस्ट की गई थी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल को इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सदगुरु once happened. Gautama, the Buddha, you heard of him? Everybody heard of Gautama? Yes. So, Buddha is not his name is Gautama Siddhartha. He became a Buddha. So he is now the only Buddha in the world. Okay. There have been thousands of them and there still are. So Gautama was sitting in a large congregation of people one morning, an early morning, earlier than this, okay. A man arrived and stood there in the shadows. This man is a great devotee. He is a devotee of Rama. You heard of Rama? Not Rami, Rama. Rama is one of the most popular deities in India. If you do not already know this, in India we have 36 million gods and goddesses. It's a very rich country. So, he is a great devotee of Rama. The devotees in India, not now and not everybody, but those who take this seriously, they will not utter any other word than the name of God that they believe in. So if they want you to come, they'll say Ram Ram. If they want you to go, Ram Ram. If they want something, Ram Ram. No other word but Ram. The clothes are all printed Ram Ram, they utter only Ram Ram, they live Ram Ram. They devoted their whole life to God. You are smart, you are not like that. You kept God like insurance. Just in case something goes wrong, I have also paid my premium. Everything that you need to do, you do it yourself. You kept God like insurance. You're smart. But this man invested his whole life in God, total. Age is passing away, little doubt has come. Are there people here who don't believe in God? Nobody? No leftists? No? Only one? Okay. What's your name? John. Only John? Nobody else? So, little doubt has come. He knows there is God. Just a little doubt. Suppose there is no God. I'm wasting my whole life doing Ram, Ram, Ram. See, this doubt will come to you only if you invest your whole life. You invest just 10 minutes in a week, then you will not get this doubt, it's all right, what's the problem? If you invest your life completely into God, then within 3 days doubt will come. Am I wasting my life just doing this? And there are other people who don't believe. See, look at this John, he doesn't believe. For him also sun comes up in the morning, for him also flowers blossom, from him also life happens. Looks like he's having a better time than me. It's a little doubt, he knows there is God, just a little doubt. Now there is an enlightened being here, he wants to confirm. But after being a well-known devotee for a long time, because he did not just go to the temple, he built many temples. At this stage in his life, how to ask whether there is God or not now? So he came early morning, stood in the shadows there and asked this inevitable question, is there God? Gautama looked at the man.
and gave a clear, emphatic no. Here this large congregation of disciples, this has always been a struggle in their mind. Is there God or no God? Is there God or no God? Oof! One big relief. Whenever they ask such a question to Gautama, he just becomes silent, he doesn't say anything. For the first time he gave a clear answer, no God. Joy spread across the congregation. Just the struggle, is there God or no God, is over. The enlightened one has declared there is no God. The message spread across the town. Through the day, celebrations happened because just imagine the freedom of it. No God means nobody sitting up there keeping accounts of what you did and what you did not do to punish you, burn you in hell or do this or that. Life is completely yours. So through the day, celebrations happened. Everybody is in great joy. The evening, once again the congregation is sitting, another man came. He also standing in the shadows. This man is a Charvaka. Charvaka means, in India, there are groups of people who are known as Charvakas. These Charvakas are out and out materialists. They don't believe anything other than what they can see. Probably this is the only culture that allows this. You will see actively missionaries of God going from village to village spreading their God message, and missionaries of no God going from village to village arguing with people and proving to them how there is no God. Probably this is the only culture that allows that. Anywhere else they would be killed. True. So if you want, you can spread God, or if you want, you can spread no God. This is true democracy, you know. This has been there like this for thousands of years. People come and set up arguments in the village and they prove to you how there is no God. So this is an expert Charvaka. Whatever kind of believer you are, if you talk to him for 10 minutes, he'll prove to you no God. For thousands of people, he's proved no God, no God, no God. Age is passing, little doubt has come. Suppose there is God. When I go there, will he leave me? And all these believers say that he's got all kinds of torture equipment up there. So because I went about proving to everybody that he doesn't exist, he may torture me much more. He knows there is no God. He's proved to thousands of people there is no God. Just a little doubt. Now there's an enlightened being here, he wants to confirm. So he appeared there in the evening. And he asked the same inevitable question, is there God? Gautama looked at the man and said, yes. Once again turmoil started. Morning he said, no God, they were all really happy. In the evening he says, there is God. So what's the game Gautama is trying to play? See, if you believe there is God, or if you believe there is no God, you're in the same boat. You believe something that you do not know. I believe this, you believe that, doesn't make any difference. You can believe whatever you want. Yes? Everybody can believe whatever they want. It need not have anything to do with reality as such. If you say, I do not know, the longing to know will arise within you. If the longing arises, the seeking arises. If the seeking arises, the possibility of knowing exists. The soul is sacred for people, the body is filthy. How is it possible? Yes? That's what we've been doing, isn't it so? Saying God is sacred, creation is filthy. How is it possible?
the very thought of God occurred to you only because you saw creation, isn't it? When you were born and you opened your eyes, you looked around, so much creation. Before you came here, so much has happened. Obviously, you did not create it. So you thought, there must be a creator. This is how you come to the creator, isn't it? The moment you thought there must be a creator, because you're in a human form, you thought it must be a big man. A small man like me cannot do all this. It must be a big man. Just 2 hands, how can it do so much creation? Must be 8 hands. Isn't it? Isn't it so? If you were a buffalo, you would be really thinking, God is a huge buffalo. Isn't it so? Yes or no? You go and ask a buffalo and see. A buffalo will insist, God is a huge buffalo, maybe 4 horns. You know Idi Amin? You heard of Idi Amin? The Uganda man? Idi Amin declared, God is black. I agree with him. If a white man can have a white God, why can't a black man have a black God? But both those people are confused. We know God is brown. Because he visited us, you know. Some time ago, I was talking to a group of people in Nashville in Tennessee, and I was telling them a joke. In the joke, I just referred to God as Him. Immediately a few ladies stood up. Do you believe God is a man? I knew where it's going. I said, see, I'm only telling you a joke. It doesn't matter. You said Him. Do you believe God is a man? They take the jokes very seriously. Now women are arguing, God could be a woman. Such problems exist only in those cultures. In India, we have man God, we have woman God, we have cow God, we have monkey God, we have everything, every kind, crawling one, creeping one, flying one. Because we foresaw all the problems of the future. See, when man was the most powerful force on the planet, man was naturally God. Now women are also gaining in their power, so women are questioning, why can't it be a woman? So tomorrow suppose dogs gain lot of power which they're gaining, so dogs will ask, why not a dog god? Actually the spelling also is close, you know. You seem to be closer than you, isn't it? So your idea of God is just an exaggerated version of yourself, isn't it? Your idea of God is just an exaggerated version of yourself. See, you're still not able to define yourself, isn't it? Whatever definition you put on yourself is not correct. Any kind of definition you put on you, it is not enough to describe this one. And this small piece of creation is like this, the source of creation. How are you going to put a definition on it? You cannot define it, you cannot understand it, you can only dissolve into it. You can experience it, you can never know it, you can't make knowledge out of it. Whatever knowledge you have about God is just pure nonsense, cultural nonsense. Depending upon which kind of culture you are in, that kind of God you have, isn't it? It can only be experienced. Experience does not mean you can eat it or you can grasp it. No.
you can experience only by dissolving in it. There is no other way. So, we are just looking for methods of dissolution so that we can experience something far bigger than ourselves. भाई समटाइम्स इस तरह था कि कुछ वीडियोस को अंडरस्टैंड करने के लिए ना आपके पास नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा डीप होना जो है ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शायद हम जाने में जो है ना उस तरह नहीं समझ पाते जिस तरह जो है ना हमें समझनी चाहिए। वैसे आज ही मैं फर्स्ट वीडियो की बात करूँ डज गॉड एग्जिस्ट की, तो मेरे लिए भाई पर्सनली वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझना, क्योंकि शायद उसकी वजह ये है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रीड आउट नहीं की हुई। वैसे मैंने भी कौन सी चीज़ ज़्यादा पढ़ी हुई है, लेकिन आपका फिर भी स्पिरिचुअलिटी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि सदगुरु जी की वीडियोस जब भी देखते हो ना, उनकी बातें सुनना और फिर उसको एक्सप्रेस करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वैसे जो डज गॉड एग्जिस्ट, इसको अगर हम लोग समझ पाएं, जो मुझे जहाँ तक समझ आई है, अगेन मेरा इतना कोई खास नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाती हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने दो एग्जांपल्स दी हमें। मतलब जिस तरह से उन्होंने एक कॉन्ग्रीगेशन की बात की और वहाँ पर एक ऐसा बंदा जो बहुत बिलीवर था, हाँ। ठीक है, और उसके भी मन में एक डाउट आया, और उसके बाद एक ऐसा इंसान जो कि नॉन बिलीवर था, जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर बिलीव ही नहीं करता था, उसका भी एक क्वेश्चन आया और दोनों को उन्होंने उसके ऑपोजिट क्वेश्चन आंसर जो दिए। सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो जो आपको एक चीज़ समझ में आती है, मुझे लगता है कि ये मैटर नहीं करता कि मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहिए कि कोई ये मान रहा है कि गॉड है या नहीं है, या मेरी बात ही मानो या मेरी बात सुनो। जो इंसान के अंदर से चीज़ आती है ना, जो उसके अंदर की ख्वाहिश होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो उसको सिखाती है, एक्सपीरियंस उससे होता है और चीज़ें जो हैं वो समझ पाता है, वो ही उसको लीड करती है, आई मीन गाइड करती है कि गॉड उसके लिए है या नहीं है। बेसिकली आपके जो कह लें मन, हाँ। आप कह लें आपका दिल जो है उसमें जो एक पैदा होने वाली जुस्तजू है, जो एक ख्वाहिश है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ज़िंदगी में जो है ना आप किसी चीज़ की तलाश में या कोई भी काम करना हो वो तब भी करते जब आपके दिल में उसकी ख्वाहिश जो है वो पैदा हो रही हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो एक आप इनडायरेक्ट कनेक्शन कह लें कि भाई गॉड पर बिलीव करना या ना करना, वो आपके अंदर की भी एक जुस्तजू होती है, ख्वाहिश होती है कि आप कभी इसके बारे में सोचें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखो एक मैसेज ये भी तो दिया गया ना कि जब तक हम लोग क्यूरियोसिटी के साथ उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हमारा बिलीव और कैसे स्ट्रांग होता रहेगा। अगर हम अंधाधुंध फॉलो करते रहेंगे मतलब किसी भी चीज़ को, तो मुझे लगता है उसमें मे बी डाउट्स कहीं ना कहीं पर आ जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप खुद से एक्सपीरियंस करते हो चीज़ें, आप खुद इतने ज़्यादा उस चीज़ को आप कह लो कि जैसे सदगुरु ने दूसरी वाली वीडियो में ये बात की गॉड को लेकर कि लाइक आप खुद एक्सपीरियंस करो और डिज़ोल्व हो जाओ उस चीज़ में। सो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका खुद का एक्सपीरियंस करना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। और यूजली ऐसा होता नहीं है कि कोई भी आपको स्कॉलर जो है, मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, वो इतनी इन डेप्थ में तो जाता ही नहीं है और ना ही ऐसी नॉलेज कभी दी जाती है। बट मैं बोलूँगी ये सदगुरु अभी जैसे उन्होंने समझाया, स्पेशली अगर मैं सेकेंड वीडियो की बात करूँ, और जिस तरह से उन्होंने एक लिबर्टी ली समझाने के लिए, और जैसे जैसे एग्जांपल्स कोट किए, सीरियसली मैं बोलूँ ये मुझे सिर्फ सनातन धर्म में नज़र आता है। मैं किसी और रिलीजन में ये चीज़ें नहीं देखती, ना ही मैं किसी और रिलीजन के स्कॉलर्स में, प्रीस्ट में, किसी में भी ये चीज़ जो देखती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों का माइंड भी कर लेते हैं, लेकिन सदगुरु जी ने जिस तरीके से एग्जाम्पल दी, मतलब मुझे ये लगता है कि आपको ना एक चीज़ फील करवाई जाती है, रियलाइज़ करवाई जाती है कि हर जो भी क्रिएचर है या जो भी आपको नेचर में चीज़ें नजर आती है, इंसान खुद भी एक नेचर है ना। सो गॉड हर चीज़ में, इनफैक्ट आपके अंदर भी गॉड है। सिर्फ ये है कि आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस करने की, रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, जो कि हमें समझ नहीं आती कि ये किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम जो है वो कितनी ख्वाहिश रखते हैं जाने। क्योंकि मोस्टली लोगों की अगर बात की जाए ना, तो मोस्टली लोग जो है ना वो ज़िंदगी जिस तरह गुजार रहे हैं ना, वो कहते हैं ठीक है बस गुजरती है, गुजरती जा रही है, गुजरने दो इसको। लेकिन जो है ना हम परखने की और उसको जो है ना
अपनी ज़िंदगी को वो देखने की कोशिश ही नहीं करते, कुछ ज़्यादा सोचने की जो है वो कोशिश ही नहीं करते। हम जो है बहुत जल्द जो है ना वो कह देते बस ठीक है यार, नहीं हो रहा, नहीं समझ लग रही, बस इसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हाँ, जब आप क्या नाम लेते हैं एक वो अपनी क्या बाउंड्री, अपनी लिमिट जो है वो क्रॉस करते हैं और उसके आगे की जब आप चीज़ें देखते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐसी नज़र आती हैं जो आपने उससे पहले कभी इमेजिन ही नहीं की होती। मुझे ये लगता है कि देखो हम लोग कितना टाइम अपनी लाइफ में गॉड को देते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ अपनी, आप कह लो कि ऐसी सेल्फिश, मुझे लगता है कि ख्वाहिशात के लिए जाते हैं कि लाइक गॉड ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो, इस तरह से हो जाए, उस तरह से हो जाए। उसके अलावा हम कभी सेल्फलेस होकर इतना टाइम नहीं देते। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको सेल्फलेस होकर आपको वो गॉड के एग्जिस्टेंस को फील करने की और समझने की, मुझे लगता है कि वो सलाहियत तब आती है, ऐसे नहीं आती जब हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं। बाकी जैसे सदगुरु जी ने बीच में बात बोली कि जो डिफरेंट मिशनरीज होती हैं जो जाकर मतलब बताती हैं लोगों को इस तरह से कि लाइक गॉड नहीं है, ऐसी भी होती हैं। ये वैसे मेरे लिए एक नया मैं कहूँगी कि ये एक नई इन्फॉर्मेशन थी और बिल्कुल सही बोला सदगुरु जी ने कि ये मुझे लगता है कि सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बाकी सारी जगहों पर तो इतनी ज़्यादा आपको बर्दाश्त नहीं देखने को मिलती, क्योंकि रिलीजन ऐसा मैटर है बाकी जगहों पर सीरियसली अगर बोलूँ तो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। खैर मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सदगुरु जी जैसा समझाते हैं, उनके जैसी एक समझ रख के लोगों तक वो बताना चाहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लाइक जिस तरीके से वो मतलब लोगों को एक कन्वे करते हैं ना, मतलब बताते हैं वो गॉड के बारे में कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स में मत पड़ो और जो आपको सही लगता है, जिस तरीके से आपको फील होता है उस चीज़ को फॉलो करना और एक सही दिशा दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो समझाते हैं ना, उस तरीके में मौजम आपकी ना एक दूसरे से इख्तलाफात नहीं बनते यार। असल में जो है ना एक अच्छा इंसान वही है जब वो समझा रहा हो ना तो उसके समझाने के तरीके में इख्तलाफ जो है वो ना हो, अगले को समझने वाले को भी जो है वो समझ लग जाए उस चीज़ की। नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना, कोई भी रिलीजन जो समझते हैं अपने आप को भाई नहीं हम ही बस अच्छे से समझा सकते हैं, उनका कभी हमेशा मुझे यही रहता है कि जो हम कह रहे हैं ना वही सही बात है। तो मुझे कभी भी सदगुरु जी की बातों में ना ये चीज़ नज़र नहीं आती कि सिर्फ मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा सदगुरु को सुना। बाकी ऑब्वियसली इतने बड़े इंसान की बातें जो इतनी आसानी से समझ नहीं आती। सो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर हमें समझाइएगा जो चीज़ हम नहीं समझ पाए, और जितना समझ पाए हैं वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।